नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज रॉबिन. सो कैसे हो मोटो लवर्स? आई होप सब लोग बढ़िया है. BMW Motorrad has launched the F900R and F900XR in India. While F900R is a naked roadster जो replace करेगी F800R and the F900XR adventure sports जो BMW S1000XR का affordable version है. It is well equipped for both sport riding and long distance touring. If you are planning to buy 900cc naked roadster or adventure tour bike, of course ये आपके लिए है. And watch this video till the end. लेकिन शुरू करने से पहले follow me on Instagram account with my channel name, that is the_moto_gears, to get news, reviews, behind the scenes, upcoming videos and so on. So what are you waiting for? Follow my official Instagram account, link in the description portion, and subscribe to my channel for awesome great content. So let's start. दोनों मोटरसाइकिल एक ही 895cc वाटर कूल्ड इंग्लैंड ट्विन सिलेंडर इंजन का उपयोग करते हैं, लेकिन पावर और टॉर्क आउटपुट दोनों के लिए थोड़ा अलग है. On the F900R, the engine makes 99 bhp of max power and 90.8 Nm of max torque. इसकी तुलना में F900XR पर इंजन को 104 bhp and 92 Nm टॉर्क देने के लिए ट्यून किया. इंजन is mated to a 6-speed gearbox. BMW F900R में हेडलाइट और कॉकपिट के साथ एक अग्रेसिव फ्रंट सेक्शन है जो हैंडल बार पर पूरी तरह से रखा गया है. ओवरऑल मस्कुलर डिजाइन एंड स्लीक एजेस कॉम्प्लीमेंट द मोटरसाइकिल एथलेटिक नेचर. गोल्ड पेंट किए गए यूएसडी फोक्स और अपसाइड कॉम्पैक्ट एग्जॉस्ट में मशीन की विजुअल अपील को बढ़ाते हैं. BMW F900R के लिए कलर ऑप्शन में हॉकेनाइट सिल्वर मेटालिक विद रेसिंग रेड, सैन मेरिनो ब्लू मेटालिक और ब्लैक स्टॉर्म मेटालिक शामिल है. BMW F900XR अतिरिक्त फेयरिंग और डुअल एलईडी लैम्प के साथ आता है जो एक प्रमुख स्टांस सुनिश्चित करता है. The short tail clearly indicates the bike's sporty nature. The motorcycle offers an upright and relaxed seating position, which ensures more comfort on long distance ride. BMW F900XR height adjustable windshield और fully adjustable hand lever से equipped है. कलर ऑप्शन में रेसिंग रेड, लाइट व्हाइट और गैल्वेनिक गोल्ड मेटालिक शामिल है. ऐसी फीचर्स जो दोनों मोटरसाइकिल के लिए सामान्य हैं उनमें एडेप्टिव हेडलाइट डायनामिक ब्रेक कंट्रोल मींस DBC, इंजन ब्रेकिंग कंट्रोल मींस EBC और BMW Motorrad ABS शामिल है. Adaptive headlight ensures safer night rides as these are automatically activated at the lean angle of 70. This provides optimal illumination when negotiating a curve. दूसरे फीचर्स में 6.5 इंच TFT कलर डिस्प्ले शामिल है जो ब्लूटूथ के माध्यम से आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट हो सकता है. इलेक्ट्रॉनिक राइडर एड्स भी उपलब्ध है जिसमें रोड और रेन की राइडिंग मोड शामिल है विद कीलेस एंट्री. BMW F900R और F900XR एक ब्रिज टाइप चैसी का उपयोग स्टील शेल कंस्ट्रक्शन के साथ करते हैं. सस्पेंशन सिस्टम में 43 mm USD फोक्स और एल्यूमिनियम डुअल स्विंग आर्म ब्रेक सस्पेंशन शामिल है. हालांकि सस्पेंशन ट्रैवल दोनों के लिए अलग है. 135 mm और 142 mm 900R के लिए और 170 mm और 172 mm 900XR के लिए. Both braking hardware is identical, same gets twin 320 mm front disc or 265 mm rear disc with BMW Motorrad ABS along with Brembo calipers. And talk about the price, BMW F900R gets single variant at just 9,90,000 rupees while F900R XR standard variant at just 10,50,000 rupees and top variant F900R XR Pro variant at just 11,50,000 rupees. All are Ex-Showroom price pan India. BMW F900R will be take on rivals such as KTM Duke 790, Triumph Street Triple RS and Yamaha MT-09. On the other hand, F900XR will be go up against the Tiger 900 GT range and Ducati Multistrada 950 in the Indian market. And that's it. So कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें टू बी अ पार्ट ऑफ मोटो लव फैमिली, और ये वीडियो फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कीजिए. अगर डाउट हो इसी वीडियो में तो प्लीज कमेंट करें एंड फॉलो माय इंस्टाग्राम अकाउंट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन पोर्शन. मिलते हैं अगले वीडियो में. बी सेफ, ऑलवेज वेयर हेलमेट, ऑलवेज वॉश योर हैंड प्रॉपर्ली, स्टे होम, स्टे स्ट्रांग. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.